Yes. So we were talking about separation techniques, experimental chemistry in the last two classes, and today we are going to do some past papers questions of chromatography because we only did this separation technique right now. So we can do the past papers of separation technique and few past papers of like experimental chemistry as well. So let's start with this. We were talking about this in the last class, these things. We still have to do some techniques, like you can see there's simple distillation, fractional distillation, separating funnel, evaporation, filtration. We need to do this as well, but before doing this, we need to do some past papers of chromatography to understand the chromatography very well, right? That's why it is compulsory to do some past papers as well. Now, just start with this first MCQ. This is not the MCQ of chromatography well, but we can do this because this is actually related with the experimental chemistry and like some instrument apparatus that we discussed in the first class of this week. So we can talk about this. Yes, so any one of you जो कि आप में से जवाब दे सके. Sir, मैं बताऊं? Yes, चलें बताएं, आप बताएं. Sir, burette. Burette. If you talk about the first MCQ, so it is actually a student needs to measure 17.6. You need to consider this. They need to measure 17.6 volume of liquid of hydrochloric acid. This time liquid is hydrochloric acid. The student has access to apparatus commonly found in school laboratory. Which piece of equipment should be used to measure 17.6 centimeter cube of hydrochloric acid? I told you, bacho, pipette is most accurate one, right? And it is always have 1 mark on it. You can even take 10 centimeter cube by this, or you can even take 25 centimeter cube. It is fixed. Not any other number we can do with pipette. So ये तो नहीं हो सकता, right? And then we know that measuring cylinder में deviation ज़्यादा होती है, problem ज़्यादा होता है. So we cannot use this accurately, and gas syringe is definitely for the volume of gases. So the right answer is burette. The right answer is burette. Right, bacho? Is that clear to all of you? Yes, sir. Okay, then let's move towards this one, and this is related to the rate of reaction. So I'm just skipping this right now. Yes, question number 3. Yes, I want कि इसको फरवा solve करें. Farwa, can you solve this, बेटे? सर कल वाली क्लास मैंने मिस कर दी थी. कोई बात नहीं. आयशा रेहान, can you solve this, बेटे? अच्छा फरवा, मैंने अपलोड कर दी है वीडियो. आप जो है ग्रुप के डिस्क्रिप्शन से लिंक ले सकती हैं वीडियो का, और वहां से आप देख सकती हैं. ठीक है सर, एक क्वेश्चन था मेरा. जी बेटे, पूछें. सर, ये तो अकॉर्डिंग टू स्केल हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल कर सकते हैं. उसके अलावा अगर थोड़ा सा हम देखें तो इसको हम वैसे भी आइडिया लगा सकते हैं. हम आइडिया से सॉल्व करेंगे. राइट नाउ स्क्रीन पे स्केल नहीं लगा सकता हूं मैं, तो हम थोड़ा सा आइडिया से सॉल्व करेंगे. अदरवाइज आप इसको स्केल से ही सॉल्व करेंगे. बिल्कुल जी. आयशा, कैन यू सॉल्व दिस? आई जस्ट वांट आंसर फ्रॉम योर साइड कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती. आयशा रेहान. Okay, that's fine if you don't want to give answer, so we can talk about someone else. Yes, anyone over here with us? Maha Khan, can you solve this, bete? Maha, can you solve this? Okay, sir. In this question, you can see this. They are asking some substances may be separated using paper chromatography. The diagram shows the result of running two mixtures in a suitable solvent, which spot has RF value of 0.3. They're asking the RF value of 0.3. Definitely, we want a scale for this. And RF value kya hoti? We know that this is the distance covered by a spot over the distance covered by the solvent. We need to do this, right? Distance covered by a spot over the distance covered by the solvent. This is right. So, क्या आंसर होना चाहिए? क्या हो सकता है इसका आंसर? ये बताएं.
0.37, this is the RF value. इनमें से कौन सा स्पॉट हो सकता है 0.37 वाला? Sir, will it be B? Will it be B or somewhere like this? Yes, absolutely. It should be B, I think, because we don't have a scale right now, so we just estimate this. Remember, if you talk about 1, so this is the complete one. This is complete one. This is the complete one, right? ये जो distance है ये completely 1 है. If you halve this distance, definitely it will be 0.5. And if you want to talk about the RF value below 0.5, तो यहाँ पर आंसर या तो आपके पास B हो सकता है या तो A हो सकता है. अगर आपके पास RF वैल्यू इससे ज्यादा होती है 0.5 से, तो आंसर C या D होता. ठीक है ना? राइट नाउ C और D तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो उसकी RF वैल्यू भी निकालने की जरूरत नहीं है आपको स्केल के थ्रू, और उसके लिए मेहनत करने की भी आपको जरूरत नहीं है. और ये है तकरीबन 0.37, which is almost 0.4, and it is near to 0.5 definitely. So I think so, and Maha is also thinking about this, that 0.37 should be of the B, the RF value of B. What do you say, बच्चों? हो सकती है या नहीं हो सकती? We are just estimating this right now because we don't have a scale on the screen right now. Right or not? Yes. Right or not, बच्चों? बात समझ में आई या नहीं? Yes, sir. ठीक है. Yes. चलें. This one बहुत ही आसान है. This is actually the burette reading. We know that burette is what? Burette is actually one of the apparatus which can be used to measure liquid volumes. So over here we have the start reading and the end reading of burette. Can you find out the difference of volume over here before the titration and after the titration? Yes, bacho. Any one of you? Musira, can you solve this? G, sir. Just try to solve this, and the rest of all you need to try this, bacho. Sir, will it be C? Will it be 5.1. C? Let's check. Let's check. What is the right answer? For example, if you talk about the start of the titration, so just look at over here. This is 22 and this is 23. That means this is 22.1, 22.2, 22.3, 22.4. So the start reading is 22.4, right? And if you talk about this one, so this is 27 and this is 28. So that means 27.1, 27.2, 27.3. So this is the end reading. So if we take the difference of this 27.3 minus 22.4, so it is actually giving us 4.9, which is this is the right answer. Yes, bacho, or not? Yes, sir. जी Yes, sir. Okay, so next to the question number 5. Yes, so I want Samin to solve this. Samin, can you solve this question today? Chromatography can be used to separate the and identify dyes present in the mixture. Which statement is correct? Can you find out the correct statement over here? Yes, Samin. Yes, sir. Let me try. I remember you today because I saw you physically. Yes, sir. I also saw you. You were talking to Suresh in that time. Yes. So you need to solve this quickly. Jaldi se. Sir, D? D. Yes. आप में से कोई है जो D को सेकंड करता है समीन के आंसर को बच्चों? Any one of you? सर बी होगा. B होगा sir. B होगा. चलें चेक कर लेते हैं. देखिए a die with an RF value 1.2. ये बात तो completely गलत हो गई. RF value 1 से ऊपर हो ही नहीं सकती, तो A cannot be the right answer. Then our die could have a different RF values in a different solvent was used. Okay. And all blue dyes have the same RF value. Chromatography can also be can only be used for colored substances. This is right. This is wrong. Colored substance नहीं. आप जो है colorless substances की भी कर सकते हैं. Locating agent use करके. Exactly. We use locating agent. That's very good. यहाँ पर problem आ रहा है. A dye could have different RF values if a different solvent was used, or all blue dyes have the same RF value. तो इनमें से कौन सा आंसर सही होना चाहिए बच्चों? B sir. Why not C? C क्यों नहीं हो सकता? Sir, क्योंकि उसके अंदर मिक्सचर दूसरे भी यूज हो सकते हैं डाई बनाने के लिए तो.
all blue dyes have a same RF value. सर दूसरे Chromatography कंपोनेंट से भी तो ब्लू डाई बन सकता है. ब्लू डाई दूसरे कंपोनेंट से भी बन सकता है. यस सर. ओके, और कोई ऐसा जो और कोई जवाब देना चाहे? एनी वन ऑफ यू दैट यू वांट टू पार्टिसिपेट? Any one of you. Chromatography can be used to separate and identify dyes present in a mixture. Which statement is correct? Yes, बच्चों. Yes, Parisha, can you answer this? Kiran, can you answer this? Adil, sorry, Daniel, Adil. Can you please answer about this one? Sir, I think it's B. It's B. So the right answer is B. Definitely, if you are using two different solvents, so the solubility is different in different substances. So if the solubility is different, definitely the movement on the paper is definitely different. If the movement on the paper is different, then the RF value is also be going to different, right? So B will be the right statement. Very good, bacho. Then this one, yes. The diagram shows the four pieces of apparatus that are used to measure the volume of gases or liquids. Which piece of apparatus should always be filled to the same level? Bachos, most easiest question right now over here. कौन बताएगा मुझे? सर मैं बताऊं? बताइए. सर पिपेट. Pipette, yes. So बच्चों ये बात मैंने pipette को पढ़ाते वक्त आपको बताई थी. That pipette is always be filled to the same level all the time. Right, बच्चों, or not? Yes, Yes. sir. Bachcho, is that right or not? You need to participate, every one of you. Right or not? Yes, sir. Yes. Pipette always fell to the same level because there is only one mark over there and it is fixed. या तो ये 10 centimeter cube हो सकती है या तो 25 centimeter cube हो सकती है. You need to use the same whatever you are using, right? For example, if you are using for 10 centimeter cubes, you need to use the one which is of 10 centimeter cube, right? So हम आगे चलते हैं. इसमें अभी हमने नहीं पढ़ा है salts. Then they are saying seawater is not a safe to drink. It can be converted into drinkable water by desalination. This is water purification. We are not going to talk about this right now. Yes, there's MCQ. बच्चों ये वाला MCQ कौन करेगा? कौन करके बताएगा? चलें. Try to solve this, बच्चों. इसको solve करने की कोशिश करें. I think you can solve this. It's easy. हाँ, मैं आपको ये बात बता दूं, इसमें अभी फिलहाल आपको एक चीज शायद मालूम नहीं होगी आप सबको, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि आयरन 2+ जो होता है आपके पास, उसका कलर ग्रीन होता है और आयरन 3+ का रेडिश ब्राउन होता है. तो इस तरह आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सर मैं आंसर बताऊं? आप एक मिनट मैं चेक कर लूं कि ये कौन इंसान है जो कितने आंसर बता रहा है. कौन बता रहा है? अगर आप बता. सर 7. 7 तुम सारे आंसर बता दोगे, बाकी बच्चे क्या करेंगे? हैं? 7 तुम्हारे पास ये बुकलेट है ना? नहीं सर अभी मैंने नहीं मंगवाई. तो मेरे फिर किसके पास है? अदनान के पास है मेरे ख्याल से. साथ मुझे पता है आपको ये आंसर पता है. आप मुझे पर्सनली मैसेज करो ताकि मुझे कंफर्म हो जाए. मुझे आंसर बताएंगी अबीर. यस अबीर, कैन यू आंसर दिस? Sir, I don't understand the question. Okay, that's fine, no issue. The question is saying to you, a paper chromatography experiment is carried out to find out the RF value of iron +3, and I told you the color of iron +3. The color of iron +3 is reddish brown, right? And the color of iron +2 is green, right? You are going to learn this later on in this chapter. Definitely, I'm going to teach you. But right now, I am telling you that iron +3 is always reddish brown in color. So that means the answer over here, A, B, C, D, that can only be right as A or C. B or D तो हो ही नहीं सकते. So this is the way to reach to your final answer. पहले तो आप गलत वालों को यहाँ पर remove कर दो. So A and C may be the right answer, but B and D are
completely wrong. Then they are saying that what you need to see, they are saying to make the spot containing Rn+3 more visible, the paper is sprayed with aqueous sodium hydroxide so that the precipitates of iron will form, and under condition of experimental RF values catch that gas. They are saying find out the RF value. Actually, what they are asking under the condition of the experiment, the RF value of Rn+3 is given by 1. 1 means at 1 you need to write the RF value. So what is the RF value over here, Abhi? What is the formula of RF value? Distance traveled by the spot divided by the distance traveled by the solvent. That's very good. So what about the RF value right now? क्या आंसर बनेगा इसका? A. X over Y. This is A, right? So the right answer, bachcho, is this is distance traveled by the spot, and this is the distance traveled by the solvent. So it is X over Y. So the right answer is A. Right or not, bachcho? Yes. Is that clear to all of you? Yes, sir. Okay. Then we have 11 भी तो हम लोग कर सकते हैं 11 में क्या है 11 में आपके पास है बेटा ये रेट ऑफ रिएक्शन का सवाल है ना रेट ऑफ रिएक्शन में करेंगे ये ओके now this one but can you solve this is related with the drawing of gases how can you dry the gas right just try this bacho every one of you just try this can you solve this or not yes mashallah Saad you are brilliant yeah mashallah साहब ये वाले का आंसर बताना है आपने सही बेटे सर सोच रहा हूँ हाँ ट्राई करो सर आई थिंक सो इसका ए होगा शायद ये कह रहे हैं यस या सी होगा ए या सी में से कोई एक है ए या सी में से कोई नहीं है। ठीक है एक सेलेक्ट करो ना ये दो नहीं आज कश्ती में सवाल ना हो एक सेलेक्ट करो ए या सी या तो गलत या तो सही सर सी को लॉक कर लें So will it be C? it would be C Okay. C okay और कोई ऐसा है जो कि C के अलावा कहना चाहता है Okay, let's check this. They are saying sulfur dioxide is a gas that is prepared by heating sodium sulfide and hydrochloric acid. It is an acidic gas. Sulfur dioxide is more dense than air. Which set of apparatus is suitable for preparing and collecting a dry sample of sulfur dioxide? Yes. So that's fine. आप सब में देखें कि sulfur dioxide produce करने के लिए जो इन्होंने reactants use किए हैं, they all are right. That's fine.
But the problem is this: in the first one, if you focus, sorry, not in the first one, in the second one, if you focus on part B, so they just open the area, right? So for example, agar sulfur dioxide banti hai, so it can go backward from the open area. So that is why this is wrong. B cannot be the right answer because the area is open in the flask, so they can, you can see this, the gas molecules can escape from that opening. So that is wrong, completely wrong. Then in the rest of 3, A, C, and D, the D one is also wrong because the gas is denser than air. They are saying that it is denser than air. That means it is heavier than air. So it should be collected by downward delivery method, not upward. So it is also wrong, right? Because it is upward delivery, right? Then we have only 2 options remain, A or C, right? So you can see this, that sulfur dioxide is actually acidic gas. Sulfur dioxide is actually acidic gas. So we need to use sulfuric acid for the drying of this gas. If you use calcium oxide, so definitely it is basic. When this gas pass through this drying agent, it will react with this and salt and water will form. So A is wrong. A is wrong, and the right one is C. Very good, bachos. So the right answer will be C. Is that right or not? Every one of you got this answer or not? Yes, sir. Okay. Then let's move towards the next one. And this is a paper chromatography. Question number 18, sorry. Question number 18. कौन कर सकता है बच्चों? बहुत आसान है, आप लोग आराम से कर सकते हैं. चलें, इसका आंसर मुझे देंगी किरण. किरण, can you answer this? Yes. Try करें. ओके, साद हसन कह रहे हैं. ओके ओके ओके, ठीक है साहब, यू आर राइट. यस किरण, क्या आंसर होना चाहिए बेटा इसका? Sir, I think it's B. It's B. B for ball. That's very good, Kiran. The right answer is B because they are asking for the substances used or the things used in the chromatography process. So definitely we cannot use marker pen. It is wrong. We cannot use thermometer. We don't require thermometer. So the right set of apparatuses are in the option B. Then chromatography paper hona chahiye, locating agent hona chahiye. It may be colorless, so we should have locating agent as well. We need to draw baseline with pencil. We need to use ruler to calculate the RF value, and we should have a specific solvent that can dissolve best spot in it. Very good, bete. Zabardast. Then we have question number 19 as well. If you focus on the question number 19, what it is saying the diagram shows 4 different methods of collecting gases, right? Which method is suitable for collecting gas, which has the properties described, right? So you can see this in the one, it is saying less dense than air. They are saying ye wala jo process hai less dense ke liye. No, this is for heavier gases, not lighter gases. So this is wrong, right? Then they are saying a denser than air and soluble in water. Second one wala jo hai aap keh rahe hain ये denser gases के लिए और soluble in water के लिए हो सकता है. Gas rings तो आप किसी के लिए भी use कर सकते हैं. Let's move towards the third one, less dense and soluble in water. If the gas is soluble in water, we cannot use this, right? So this is also wrong. Fourth one, denser than air. No, this is for lighter gases. So the right answer is B, right? Gas syringe can use for any type of gas. If it is soluble, if it is denser, if it is lighter, we don't care. Gas syringe can be used to collect any gas, right, bacho, or not? Yes. Okay, then there's MCQ number 20. Bacho, can you solve this? This is a little bit problematic question. For this, we need to calculate RF values, and for this, we need to require our ruler. So, बच्चों, ये problematic हो सकता है. Right now, हम इसको solve नहीं कर सकते, but आप इसकी picture ले सकते हैं.
बट मैं आपसे पिक्चर का भी अगर कहूंगा तो यू विल हैव अ डिफरेंट पिक्चर्स इन योर मोबाइल फोन. समवन हैव a good picture, someone have a like small picture, someone is on mobile, someone is on iPad, someone on laptop. So maybe the pixel are going to be disturbed and maybe the calculations are going to be disturbed. So leave this question. If you have past papers, so you can solve over there. Otherwise you can leave it. It is simple. You need to find out RF values only, right? Okay, this one 22. कौन कर सकता है MCQ number 22? Yes, I just want के इसको solve करें. Aisha Rehan, can you solve this बेटे? Aisha, I cannot hear you. If you are going to solve this, so you can even message me. I will check over there on my WhatsApp. But you need to message me on my WhatsApp so I can check. Okay, Saad, very good and very fast, mashallah. Daniel, I am not receiving answers from you. Hansala, I am not receiving answers from you. If you are interested or if you are having right answers in your copies or in your masterclass booklet, so you can answer me over there on my WhatsApp so I can confirm or I can be happy with you guys here. Mashallah, आप लोग भी solve कर रहे हैं, सही solve कर रहे हैं. Daniel, Hansala, Maha, every one of you over here with me. If you are going to answer yourself or if you are going to check yourself, क्या यार सही किया मैंने या नहीं किया, मैं सर से पूछ लूं, so you can send me the right answer. So I will check यार कि आप में से कौन ज़्यादा अच्छा जा रहा है इस चैप्टर में. But right now on the screen and by unmuting your mic, the right answer should be from Aisha. Yes, Aisha. Can you please answer this or not? If not, that's okay, no issue. We will solve this. आयशा, आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरे ख्याल से आपका माइक वर्क नहीं कर रहा है. आप मैसेज कर दो मुझे व्हाट्सएप पे. चले, Maha, can you answer this? Okay, sir. Okay, Daniel, that's very good. You are contributing at least. Yes, very good, Kiran. Very good. We will check the right answer. It is saying that result of vapor chromatography experiment are sure X is an aqueous solution of salt of group 1, Y is an aqueous solution of salt of transition metal. Which raw is correct? Which raw is correct? Larger RF value किसकी है बच्चों? If you focus over here, तो larger RF value definitely Y की होने वाली है. ठीक है, तो right answer आपके पास क्या हो सकता है? Right answer आपके पास या तो Y हो, या आपके पास C हो सकता है या तो D हो सकता है. इन दोनों में से कोई एक आंसर आपके पास right हो सकता है. Now they are saying required are locating agent. Definitely आपके पास group 1 जो होंगे, group 1 के जो salts होते हैं, ये आप periodic table में पढ़ लोगे. ग्रुप 1 के जो सॉल्ट्स होते हैं बच्चों वो कलरलेस होते हैं और ग्रुप ट्रांजिशन मेटल्स के जो सॉल्ट्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं. तो ग्रुप 1 वाले जो सॉल्ट्स होंगे वो कलरलेस होंगे, तो उनके लिए आपको लोकेटिंग एजेंट चाहिए होगा. तो X के लिए आपको लोकेटिंग एजेंट चाहिए होगा. तो राइट आंसर इज C. C will be the right answer. ओके बच्चों, और नॉट? Yes, sir. Okay, then let's move towards the next question. Yes, सबसे पहले जो मैंने आपको बात बताई थी कल के लेक्चर में स्टार्ट करने से पहले, क्रोमेटोग्राफी के अलावा आपके पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इज दैट सब्सटेंस इज प्योर और इम्प्योर. सो कैन एनीवन ऑफ यू आंसर मी दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. Very good, mashallah. Zabardast, Zabardast. Very good, Daniel. Very good, Mariam. Zabardast.
Daniel, very good. Mariam, very good. Okay. Anjula, माशाल्लाह जबरदस्त बेटे. आज तो आप मुझे वैसे ही बहुत अच्छे लग रहे हो अंजला, और ये बात आप जानते हैं कि आप मुझे क्यों अच्छे लग रहे हैं आज. आज जो आपने स्कूल में किया है ना मेरे साथ, आप यकीन करें कोई नहीं कर सकता. वेरी गुड. अभी अभी तुमने मुझे इतने सारे आंसर भेज दिए. अभी इसमें से राइट कौन सा कह रही हैं आप? Sir, the one I just sent right now. Okay, you are saying that it's B, right? Yes, sir. You are brilliant, mashallah. You are brilliant students. You are right, absolutely, all the time. So the substance one is pure substance. That is fine. This statement is right. The pure substance is one because it is start melting at the fixed temperature and ends the melting at fixed temperature. But this is not the correct statement because it is not a complete statement. Substance one and substance two both are pure. तो इधर यहाँ पर सिर्फ substance one लिखा हुआ, तो ये complete statement नहीं हुई, इस वजह से ये सही नहीं है अभी. ठीक है ना? For example, if I talk about group number 8 elements and I say to you that group 8 elements having 8 electrons in the outermost shell, so maybe you think that this is the correct statement, but I think there is something missing, and which is helium. So the correct statement is group 8 elements having 8 electrons in the outermost shell except helium. This is the correct statement. So same as it is over here, they are saying substance 1 is pure, that's fine, but substance 2 भी pure है, तो उसके बारे में उन्होंने बताया नहीं, तो ये correct complete statement नहीं हुई. Second one कह रहा है आपसे substance 3 and substance 4 are impure. You can see this, they are melting with a range of temperatures, and these two are impure substances. Then the right answer will be B. You all are absolutely perfect. Very good बच्चों. चलें 25. कौन बता सकता है इसका आंसर? 25. Yes, Aisha, you are also right. Okay, Daniel, let me check. A gas less dense than air and dissolved in water. Less dense. Okay. Okay. That means the right answer is. I think you can better see this question number 25. They are saying that this is less dense and dissolve in water. So if it can be soluble in water, so how can we use the part D? And Mariam, you need to focus over here, bete. Mariam, if the gas is less dense मतलब lighter है, lighter gas है, तो फिर आप उसको A से कैसे कलेक्ट कर सकती हो? Sir, B. B will be the right answer. Maha, Hanzala, Saad, Daniel, you all are right. The right answer is B. Very good. Because the gas is lighter, so we need to collect this by upward delivery. And it is also soluble in water, so we cannot use this. Soluble in water, we cannot use this. Lighter, we cannot use this. Lighter, we cannot use this. The right answer will be B. Right, bacho, or not? Yes, sir. Okay, then over here. Yes, bacho. Can you solve MCQ number 30? Can you solve this or not? Let's try this, bacho.
शायद ए, कोई कह रहा है शायद ए वाला आंसर नहीं चाहिए मुझे, कंफर्मेशन वाला ए चाहिए साथ, शायद नहीं चाहिए मुझे आपसे, मुझे चाहिए कंफर्मेशन आंसर। जब आप सही जवाब दे रहे हैं तो फिर कंफर्म आंसर दें, हाँ या ना वाली बात, सही या गलत बस। Sir, will it be B? Will it be B? Okay, we can check this. Is that B or A? Whatever the right answer, we will check this. Don't worry. Okay, so let's start this MCQ. So this MCQ is saying that a chemist wishes to separate and identify a mixture of substances using paper chromatography. The diagram shows the apparatus used. The solvent is water. Okay. The solvent front is allowed to reach the top of the paper before the chemist removes the paper from the solvent. Which problem does this cause? This causes the spot nearest the bottom of the paper to catch up with the spot above it. This make it impossible to calculate the RF value. This make it impossible to using liquidating agent. This result is in a safety hazardous caused by the solvent fumes. I think the problem will be it would be the right answer will be B, right? If you just take out the paper before separating completely, definitely if the spots are not going to be separated completely and they're not far apart from each other, so it is difficult for you to find out the RF value of each spot, right? So you need to take time to separate the spots. If the spots are not separated completely, then it will be difficult for you to find out the RF value. So ये कह रहे हैं आपसे a chemist wishes to separate and identify a mixture of substances using paper chromatography, and then the solvent front is allowed to reach to the top of the paper before the chemist remove the paper from the solvent. ऊपर पहुंचने से पहले ही उन्होंने क्या कर दिया, अलग कर लिया। जब ऊपर पहुंचने से पहले ही आपने उसको हटा लिया है, so it is difficult to find out the RF value. Right? नहीं सर, ये कह रहा है solvent front is allowed to reach the top of the paper. तो उसने बाद में लिखा होगा before the chemist remove the paper from the solvent. अच्छा, उसने बोला कि पहुंच गया वहां तक, right? Yes sir. The solvent front is allowed to reach to the top. ये पहुंच गया of the paper before the chemist. ठीक है, उसने पहुंचा दिया है, उसके बाद उसने remove किया है, ठीक है। Which problem does this cause? This cause the spot nearest the bottom of the paper to catch up with the spot above it. नहीं, इस तरह का तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ए कौन कह रहा था? मैं क्या सर? इसमें क्या प्रॉब्लम है? साथ ए में क्या प्रॉब्लम नजर आ रहा है? सर क्योंकि वो सॉल्युबल होगा स्पॉट, तो सर वो उसके साथ फिर सॉल्वेंट के साथ मिक्स होकर ऊपर आ जाएगा ना। कौन सा स्पॉट सॉल्युबल होगा? स्पॉट्स तो सारे ही आएंगे ऊपर। नहीं सर, आई मीन वो सॉल्वेंट साथ फिर ट्रेवल करके मजीद ऊपर आ जाएगा और फिर मिक्स हो जाएगा दूसरे स्पॉट के साथ। तो ऑलरेडी से कोई स्पॉट्स तो नहीं लगे हुए ना, तो स्पॉट्स तो सेपरेट होंगे पेपर के ऊपर लाजमी। यस सर। अच्छा, ये कलरलेस तो नहीं है? क्या कह रहे हैं इसमें? कलरलेस ऐसा कुछ सर नहीं लिखा सॉल्वेंट वाटर है। सॉल्वेंट वाटर है तो कोई मसला नहीं है। सॉल्वेंट वाटर है तो हो सकता है ना, कोई आपके पास कोई डाई हो या कोई भी चीज हो तो कलर स्पॉट्स तो आ सकते हैं। सॉल्वेंट तो मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट्स आर कलरलेस ना, तो वाटर हो या कुछ भी हो कलर आ सकता है। इसके अंदर एक चीज मुझे जो नजर आ रही है डायग्राम के अंदर प्रॉब्लमेटिक, वो ये है कि जो डायग्राम है ये ओपन है ना, इसमें सिस्टम इन्होंने क्लोज यूज नहीं किया और पानी है वैसे भी आपके पास, तो सेफ्टी हैजर्डस तो कॉज नहीं हो सकता, तो डी आंसर तो नहीं हो सकता। दिस मेक इट इम्पॉसिबल टू यूज अ लोकेटिंग एजेंट। लोकेटिंग एजेंट इम्पॉसिबल क्या मतलब है? इसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता। RF वैल्यू का इशू आ सकता है इसके अंदर अगर आएगा तो। This caused the spot nearest the bottom of the paper to catch up with the spot above it. ऐसे इसका आंसर बी होना चाहिए। देखो ए में तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप उसको प्रॉब्लम बोलो। अगर पानी के अंदर सॉल्युबल है मिक्सचर, उसमें लिखा हुआ है इट इज सॉल्युबल इन वाटर या सॉल्वेंट इज वाटर, तो इसका मतलब ये है कि ना वो सॉल्युबल ही होगा पानी के अंदर, इसलिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर पानी के अंदर सॉल्युबल है तो स्पॉट्स भी सेपरेट होंगे, तो वो एक दूसरे के ऊपर नहीं मैचअप हो सकते, कैचअप नहीं हो सकते, वो अलग अलग ही होंगे। प्रॉब्लम आएगी तो RF वैल्यू की ही आएगी, क्योंकि
आपके पास यहाँ पर अगर चलें, अगर कैचअप हो भी गए, कोई 2 स्पॉट्स कैचअप हो भी गए, तो RF वैल्यू का प्रॉब्लम आ सकता है, राइट? तो इसका आंसर बी होना चाहिए, आई थिंक सो। इसका आंसर बी होना चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग, बी होना चाहिए इसका आंसर या ए होना चाहिए? सी और डी तो नहीं है इसका आंसर। क्या होना चाहिए बच्चों? सर बहुत कंफ्यूजन वाला है, समझ नहीं आ रहा। हाँ, इसने अल्फाजों के अंदर जो है ना थोड़ा सा गंदा काम किया, अल्फाज बहुत गंदे इस्तेमाल किए, उन्होंने बहुत क्लियरली यूज नहीं किया अल्फाजों को, इस वजह से ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। और ऊपर से उन्होंने क्वेश्चन भी इतना उल्टा लिखा है। अगर उन्होंने लिखा हुआ था बिफोर बिफोर का लफ्ज यूज करने का, उन्होंने इतना खराब कर दिया एमसीक्यू को, वहां इनको कॉमा लगाना चाहिए। खैर, दिस इज द राइट सर आंसर। इसका सर वो ये तो नहीं याद आपको किस ईयर का पेपर है ये? हाँ यार, पता नहीं है, देखना पड़ेगा मुझे। आप लोग इसकी पिक्चर ले लें, चेक कर लीजिएगा, आराम से मिल जाएगा। ये करीब ओके सर। ऐसा होगा, इसकी पिक्चर ले लें आप। मेरे ख्याल से इसका आंसर बी होना चाहिए, बाकी आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पर और चलें इसका आंसर बताएं, क्वेश्चन नंबर 35। सर आई थिंक तो इसका सी होगा। इसका आंसर सी होना चाहिए, वेरी गुड। Q इज अ प्योर सैंपल, दे आर सेइंग Q इज अ प्योर सैंपल, जब ये प्योर है तो डेफिनेटली उसका स्पॉट एक ही होगा। तो एक स्पॉट वाला कौन सा है? बी, सी और डी तीनों ही है, ठीक है? और ए आंसर नहीं हो सकता क्योंकि उसके 2 स्पॉट्स हैं, ठीक है ना? उसके बाद बोल रहा है इन द क्रोमेटोग्राफी, अच्छा, द सिंगल RF वैल्यू इज 0.9, और ये कह रहा है 0.9 है। RF वैल्यू जब 0.9 है, इट शुड बी नियर टू द सॉल्वेंट लेवल एज वेल, सो द राइट आंसर इज सी, वेरी गुड। तो आपके पास यहाँ पर प्योर सब्सटेंस, ये तो प्योर नहीं है तो ये राइट नहीं आंसर, तो ये भी प्योर है, ये भी प्योर है, ये भी प्योर है, but the RF value is 0.9, so it should near to the solvent level. The right answer will be C, right बच्चों or not? जी सर। Okay, then there's one 40, MCQ number 40 कौन बता सकता है? MCQ number 40 बच्चों, they are saying the diagram shows a chromatogram which was prepared using spots of 5 different inks. What is the total number of different dyes present in 5 inks? क्या आंसर होगा इसका बच्चों? सर आई थिंक तो इसका बी होगा। बी होगा। अच्छा देखें, आपने ये याद रखना है, मैंने जो आपको कल बताया था, सेम हाइट मींस वी हैव सेम डाइज, 1 2 3 4, वी हैव 4 डाइज ओवर हियर, सो द राइट आंसर विल बी बी, वेरी गुड। यस, व्हाट अबाउट 41? It is very simple, you need to remember this. What is the relation of this spot with the solvent? You need to remember this. It should be soluble in the liquid, right or not? Yes. Okay, then 42. If you talk about MCQ number 42 बच्चों, so I told you in the yesterday's class, जहां से आप spot का distance calculate करेंगे, वहीं से आप solvent का distance भी calculate करेंगे। So the RF value over here is y over x plus y. So y over x plus y is the B. Right answer is B. Right बच्चों or not? Right बच्चों? Yes, sir. Okay. इसमें That Z की is- वैल्यू क्यों नहीं लेंगे? Z की वैल्यू इसलिए नहीं लेंगे बेटे क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हो जहां से स्पॉट का डिस्टेंस, वहीं से सॉल्वेंट का भी लोगे, ये Z इसलिए नहीं लेंगे, ठीक है? सर वो जो अभी क्वेश्चन में थोड़ा सा सर फंसे नहीं थे सर, उसका आंसर बी है। ये आंसर है ना उसका? यस सर, विंटर 17 का क्वेश्चन है वो। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, उसका आंसर बी है। उसे ए में तो ऐसा मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था ना। सर थोड़ा सा वो समझा सकते हैं क्वेश्चन? कहाँ गया? ये रहा ना, यही है ना? यस सर, ये वाला।
अभी देखो क्या कह रहा है, केमिस्ट विशेस टू सेपरेट, ये कह रहा है इसकी ये कुछ चाह रहा है कि सेपरेट करना और आइडेंटिफाई करना मिक्सचर को ऑफ सब्सटेंसेस यूजिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज कर रहा है, डायग्राम शोज द apparatus यूज, द सॉल्वेंट इज वाटर। ठीक है ना, इसने सॉल्वेंट वाटर लिया है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं आपसे कि आपके पास द सॉल्वेंट फ्रंट इज अलाउड टू रीच टू द टॉप ऑफ द पेपर। ये कह रहा है कि यहाँ पर टॉप ऑफ द पेपर तक आपके पास सॉल्वेंट फ्रंट पहुंच गया है। ठीक है, यहाँ तक पानी चढ़ गया है इसके ऊपर। ठीक है ना, उसके बाद बिफोर द केमिस्ट रिमूव द पेपर फ्रॉम द सॉल्वेंट, जब वो पेपर उससे रिमूव करता उससे पहले ही वो यहाँ तक पहुंच गया। सही है, अभी कह रहा है कि ये क्या प्रॉब्लम कॉज करेगा, जब वो यहाँ तक पहुंच गया तो क्या प्रॉब्लम कॉज करेगा। अब देखें, दिस कॉज द स्पॉट नियरेस्ट द बॉटम ऑफ द पेपर टू कैच अप विद द स्पॉट अबव इट। ये बात तो ऐसा नहीं हो सकता, जैसे आप देखो यहाँ पर ऐसा कुछ नजर ही नहीं आ रहा। यहाँ पर एक स्पॉट अलग है, ये वाला 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 स्पॉट अलग है ना, सारे स्पॉट अलग अलग हैं। तो Yes, sir. एक दूसरे के ऊपर स्पॉट्स जब मर्ज नहीं हुए हुए तो वो मिक्स नहीं हुए हुए, तो ये प्रॉब्लम तो नहीं आएगी हमारी, ऐसी है ना। जी सर। सिर्फ प्रॉब्लम जो हमारे पास आएगी ना वो ये आएगी कि आप आरएफ वैल्यू नहीं निकाल पाओगे सही से, क्योंकि वो पेपर से ऊपर क्रॉस कर गया पानी का लेवल। सॉल्वेंट का जो लेवल था वो पेपर से ऊपर से निकल गया। अब आप कैलकुलेट कैसे करोगे डिस्टेंस कवर्ड बाय द सॉल्वेंट, ये प्रॉब्लम है। ओके, ठीक है सर। सही है, यस सर। चलें ये लास्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम जो है इसको एंड करते हैं। ये एमसीक्यू तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, तो आप एक काम करें, आप इसकी पिक्चर ले लें, 43 44 की पिक्चर ले लें जल्दी से। दिस इज योर होमवर्क। बच्चों 43 और 44 की पिक्चर ले ली आप लोगों ने। चलें 45 और 46 की भी पिक्चर ले लें जल्दी से फिर। डन बच्चों। यस सर। उसके बाद आपके पास और कोई एमसीक्यू है, 51 की भी ले लें, उसके अलावा तो कोई नहीं है। 51 की ले लें। अच्छा, जिसके पास बुकलेट है तो वो उसी में सॉल्व कर लीजिएगा, जिसके पास बुकलेट नहीं है वो पिक्चर ले सकता है। ठीक है, यस उसके सर। अलावा उसके अलावा ये 55 की पिक्चर ले लें आप। 55 जिसके पास बुकलेट है वो उसमें सॉल्व कर लें, जिसके पास नहीं है वो उसकी पिक्चर ले लें। ठीक है, किरण के पास भी है, अदनान के पास भी है, और हंजला के पास भी है, और किसी के पास भी, परवा के पास भी है। बच्चे खाते मेरे ख्याल से बच्चों के पास है तो वो आप लोग कर सकते हैं। And these are enough, right? We will talk about the later of the MCQs and question answers, ATP questions about